Hello everyone. My today's topic for class 12 is protocol. We will see what is internet protocol or you can say communication protocol. Last video we have covered the networking devices. So devices are essential for connecting the system and peripheral devices with the computer networking एंड प्रोटोकॉल्स मीन सेट ऑफ रूल्स। अगर आपके पास सिर्फ डिवाइसेस है तो डिवाइसेस के थ्रू आप कनेक्ट करेंगे बट यू ऑल्सो नीड अ प्रोटोकॉल। एक प्रोटोकॉल भी होना चाहिए जिसके थ्रू आप जो फॉलो करके आप रूल रेगुलेशन को एक सिस्टमैटिक वे में काम करेंगे। सो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और रूल्स फॉर इंटरनेट। मीन्स किसी भी इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। यहाँ बार बार नेटवर्क की जगह इंटरनेट भी लिखा हुआ है और इंटरनेट आपका नेटवर्किंग ही है। सो आप कम्युनिकेशन के लिए कुछ रूल्स बनेगा दैट इज कॉल्ड protocol. So a protocol means the rules that are applicable for network. Protocol defines a standardized format for data packets, techniques for detecting and the correcting errors and so on. To understand the concept of communication protocol, आपको ट्रैफिक रूल रेगुलेशन भी समझना होगा। जिस तरह ट्रैफिक में सिग्नल्स की वैल्यू है इस तरह से इसमें भी आपका है रूल्स है जिसको फॉलो करके आपका डेटा ट्रांसफर होता है। सो अ प्रोटोकॉल इज अ फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ मैसेज फॉर्मेट एंड द रूल्स that two or more machine must follow the exchange those messages. We need protocol every time we want to do something on another computer. Every time we want to print something on a printer network printer, we need protocol. Every time we want to download a file, we need a protocol. Every time we want to save our work on the disk, we need protocol. So unless the disk is नेटवर्क फाइल सर्वर नहीं होना चाहिए। सो दीज कॉन्सेप्ट मतलब अगर आपको फाइल सेव करना है, आपको प्रिंट करना है, आपको फाइल डाउनलोड करना है, फॉर ईच एंड एवरी पर्पस यू मस्ट फॉलो सम रूल्स। सो most protocols support multitasking. Multitasking means more than one task can be performed at a time. So also one operation can involve several protocols. For एक example से समझिए NFS Network File System is a protocol which is used to write a files is performed with NFS operations but use another protocol to perform function call on remote host that uses another protocol to deliver a datagram to a port on a remote host that uses another protocol to deliver a data on internet and so on. So a protocol is a formal description of messages format and the rules that two or more machine must follow the exchange those messages. So एक रूल के थ्रू ही आपका नेटवर्किंग में डेटा ट्रांसफर होगा जिसे हम लोग प्रोटोकॉल्स करते हैं। सो इंटरनेट प्रोटोकॉल में 4 लेयर्स होते हैं। ऐसे OSI मॉडल में 7 लेयर्स होते हैं बट if we are talking about the internet protocol there are 4 layers: application layer, transport layer, internet layer and data link layer. So this process is just opposite in receiving and sending in the network. So application layer, transport layer, internet layer, data link layer. अब शॉर्ट में हिस्ट्री देखिए। हिस्ट्री में हम लोग पहले भी इंटरनेट हिस्ट्री में देख चुके थे। इंटरनेट का जो ओरिजिन हुआ था दैट इज थ्रू ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये
रिसर्च कंडक्टेड बाय डी ARPANET डेवलप TCP/IP। TCP/IP जो एक कॉन्सेप्ट है, जो एक प्रोटोकॉल है, वो आपका डेवलप हुआ था इन मिड 1970s। द फर्स्ट यूज इन मिलिट्री पर्पस, द स्विच फ्रॉम ARPANET to TCP/IP was officially completed in 1st Jan 1983। तो TCP/IP जो था वो आपका जो इंटरनेट का ओरिजिन हुआ था उस समय वो मिलिट्री पर्पस के लिए यूज किया गया था। सो आपका TCP/IP कॉन्सेप्ट भी आपका मिलिट्री पर्पस के लिए ही यूज हुआ और उसका डेवलपमेंट हुआ इन 1970 और वो ऑफिशियली जब यूज किया गया 1983 में। सो वी विल सी TCP/IP। TCP lies in transport layer। तो इंटरनेट के लेयर्स में ट्रांसपोर्ट लेयर में ही होता है। इट कन्वर्ट्स डेटा इमेजेस इनटू स्मॉल पैकेट्स टू ट्रांसपोर्ट देम थ्रू द नेटवर्क and send the data packets in order to minimal errors. It eliminates duplicate data and resends lost and discarded packets. So TCP/IP layers set of protocol, ये भी प्रोटोकॉल है। So TCP/IP is protocol assumes that there is a way to communicate reliable between the two computers. So TCP/IP application uses 4 layers. An application protocol such as mail, a protocol such as TCP that provides service need by many applications, IP which provides the basic services getting datagram to their destination, the protocols needed to manage a specific physical medium such as Ethernet or point-to-point line. IP lies on internet layer. It is responsible for addressing each packet to destination and responsible for selecting best route to send packet to its destination. इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो TCP/IP is based on CATNet model. This model assumes that there are a large number of independent networks connecting together by gateway. The user should be able to access different networks before getting the final destination. So as far as the user is concerned, all the needs to know order to access another system is an internet address. So इसका जो एड्रेस होता है that is look like ये 4 digits में 32 bit का actual number होता है 32 bit and it is normally written as 4 decimal number and each send 8 bit of address that is termed as octet. It is used by internet documentation for 8-bit chunks. The term byte is not used here because the TCP/IP supports by some computers that have a byte size more than 8 bits. So TCP/IP जो होता है transmission control protocol, internet protocol that is same as working during shifting our residence to a new location. वो डेटा लेता है और डेटा को डेस्टिनेशन तक भेजता है, that is TCP/IP. Next one is HTTP, Hypertext Transfer Protocol. So ये आपका application layer में होता है. The Hypertext Transfer Protocol is an application layer protocol with the lightness and speed necessary. It is necessary for distributed collaborative hypermedia information system. It is a generic stateless object oriented protocol
which can be used for many tasks such as name server and distributed object management system through extension of its request method. A feature of HTTP is typing of data representation, allowing system to build independently of data being transferred. So data transfer के लिए ये use होता है. HTTP has been used by World Wide Web Global Information Initiative since 1990 और ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल है और फंक्शन इज रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, मतलब कोई रिक्वेस्ट करेगा तो उसके अकॉर्डिंगली उसको रिस्पॉन्स देगा. दैट इज रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल इन क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल. सी द फंक्शन ऑफ, ये HTTP क्लाइंट है और ये HTTP सर्वर है. यहाँ से ये HTTP को रिक्वेस्ट भेज रहा है क्लाइंट और उसके अकॉर्डिंगली ये सर्वर इसको रिस्पॉन्ड करता है. सो HTTP protocol consists of two fairly distinct items, that is a set of requests from the browser to server and set of response going back to another way. So HTTP was designed for use in web. It has been intentionally made more general than necessary with eye to future object-oriented applications. Next is FTP, that is File Transfer Protocol. So File Transfer Protocol is very useful to transfer files from one network in an organization to another. It is an effective way to get a geographical dispersed group to cooperate on the project. It is a potent and popular way to share information over the internet. इसमें भी FTP client request करता है FTP server को and FTP server get the response on the request. So actual file not in the form of hypertext. So FTP is used to promote sharing the files. It is used to encourage indirect or implicit use of remote computers. It is used to shield a user from variant in file storage system, and it is used to transfer data reliable and efficiently. FTP through usable directly by the user at the terminal. It is designed mainly for the programmers. Next is Telnet. Telnet is developed in 1969. So it lies in application layer. It allows to access someone else's computer to remote login, and Telnet is different from HTTP and FTP. So Internet Protocol Suite is nothing but a set of rules for communication. Such rules are very necessary as nowadays because of increasing number of computer in Internet. So it has been very helpful to all mankind. So किसी भी सिस्टम को जब आप इंटरनेट और नेटवर्किंग में कनेक्ट कर रहे हैं टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड एक्सचेंज डेटा, तो you must follow the rules. So set of rules is known as a protocol, और प्रोटोकॉल के लिए आपका different protocols है HTTP, FTP, TCP/IP and Telnet. These are the protocols which used to transfer the data
on the internet. That's all from today's lecture. Thank you. Bye bye.